This is my first makeup video. I hope you like this. So let's start. First, मैं एक wet tissue ले रही हूँ यहाँ पर and I'll clean my face with that. Also आप लोग जो है face wash use कर सकते हो or maybe. Now, next thing is to moisturize your face. So I'll moisturize with Nykaa moisturizer. Just rub it. Now next thing is to apply a lip balm. Now it's time to apply primer before makeup. So I'm applying primer and I'll mention all the makeup product links in description box so you can check it. Now next thing is to conceal. I'm using a darker shade. First I'll use darker shade to conceal my face so that my base looks good. This is Pro Concealer. Next I'll be using a lighter shade to conceal my face. Conceal all over wherever you have dark spots or pigmentation in under eyes. I am having under eyes and pigmentation over my face, so I'll be using there only. Okay, so next step is to use foundation. I'll be using Miracle foundation. I don't know the shade number, but I'll put in. Okay, so before that I was just saying कि makeup sponge soak करना, wet करना बहुत ज़रूरी है before dab on your face. Dabbing everywhere. And next step is to conceal. Now I'm concealing my face with again with a lighter shade, and this is Maybelline Wella concealer. So again, dab on your face. नेक्स्ट इज़ कि मैं कंसील करूँगी यहाँ पे अपनी आईज़ ताकि मेरा आई मेकअप और अच्छा इन्हांस होकर दिखे. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रो माई आईज़ and this is two-sided. When you can color your eyes, and second is to brow your eyes well, as I have done both sides. Next step is to use loose powder. So I am using loose powder at my cheeks area, under my eyes. Next step is to compact. Now I'm using a palette of Jaclyn Hill and I'm taking brown shade. Just blend it very well. More and more blending helps in good eye makeup. Next shade is dark brown. Now I am taking another shade of my eyelid and just blend it. ऑफ करके मैंने जो है अपना दूसरा आई का भी किया blend. Now I am using another shade and start blending it again. Next step
is to enhance your eyes by putting on glitter. So here I'm using a glitter and start spreading over all over my eyes. And next, ओके अब यहाँ मैंने अपना बेस सेट किया जो भी मैंने लूज़ पाउडर यूज़ कर रखा था. नाउ उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश ऑन ले रही हूँ फ्रॉम द शुगर पैलेट एंड चीक्स पे पूरा ब्लश लगाया मैंने. देन टेकिंग सम ब्रॉन्जर एंड इससे मैंने थोड़ी फेस शेप करा. नेक्स्ट आई एम यूजिंग आईलाइनर. ओके सो यहाँ पे ऑफ कैमरा में मैंने आईलाइनर लगाया बिकॉज ऐसे मुझे नहीं लग पा रहा था. ओके सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग 2 shades to put in my under eyes. Now I'll curl my eyes so that I can apply mascara, and now I'm using the mascara. Next is to put on eyelashes ताकि आपकी eyes और enhance हो. आई मेकअप अच्छा है तो आइज़ enhance होनी ज़रूरी है. सो ये भी प्रोसेस कंप्लीट. अब मुझे ये लगा कि मेरी आइज़ में थोड़ा ग्लिटरी कम है तो मैंने थोड़ा सा और ग्लिटर लगाया. नाउ आई टेक हाइलाइटर फ्रॉम दैट सेम पैलेट ऑनली शुगर की, और मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने फेस पे लगाया अबव द चीक्स एंड नोज़ एंड चिन एरिया पे, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर. एंड हियर इज़ माई आई लुक. Okay, so last step is to put on lipstick. So here I'm using Nykaa ki lipstick. Shade I'll mention in my description box. Okay, so here I've used 2 shades because मुझे ये थोड़ा डार्क लग रहा था. So I thought कि 2 shades का मिक्सचर करके देखते हैं. ये दोनों shades जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में you can check. And to enhance my makeup और lipstick, यहाँ पर मैंने एक glittery lip gloss यूज़ की है. So here's my final look. Okay, last step is to fix your makeup with a makeup fixer. And it's done. Okay, and dab all your makeup. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and